Hello students, welcome to Icon Tutorial Khordha. I am Manoj Kumar Panda. Today we will discuss here the whole topic here that in mathematics class 10 students please listen. Okay, class 10 students today we will discuss real number, polynomial, linear equation of two variables and quadratic. Very shortcut way in one video at a time 4 chapters I will finish. Okay, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ रियल नंबर पॉलिनोमियल लिनियर इक्वेशन जति जति मेन कांसेप्ट जा दरकार जेरा हला जो पाठडा दरकार आ जति कि हमर माने से चैप्टर कोन कोन अछि एग्जैक्टली कोन कोन अछि आ वेरी शॉर्टकट रे कम समय भीतर मु चेष्टा करछि कह देबा पाई ओके कारण रिवीजन टाइम आसी निहाते आसिलानी पिला मानकर 10th क्लास पिला माने जो माने एग्जाम देबे से माने निश्चित वीडियो देखिया दरकार ओके आ जोटा डाउट होबो किछि ताको डिटेल्स पचारियो मते कमेंट लिखि दबो म ताको डिटेल्स बुझाई देबी राइट तो फास्ट हमें रियल नंबर तो रियल नंबर कौन वेरी मुझे रैपिडली कहूँ चेष्टा कर बुझिया जतन बुझ तो बार बार वीडियो देख बुझ पार और मु भूल कहबी जदि भूल कहबी पुणी मुझे निजे भी करेक्शन कर दे पारिबी ओके डोंट वरी फॉर दैट तो रियल नंबर तो व्हाट इज रियल नंबर तो बिफोर दैट रियल डिस्कसिंग रियल नंबर यू नो दैट नेचुरल नंबर होल नंबर्स इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स देन इरेशनल नंबर्स आल्सो रियल नंबर्स हियर तो नेचुरल नंबर होल नंबर एंड इंटीजर एंड rational number and irrational numbers. So natural number here n and whole number, this is natural number, this is whole number, this is your integer and this is your rational number. Sorry, this is integer z and this is rational number and another is irrational number. As a whole that is a real number, right? So that is real number. So what is here real number? You can say here real number what? Look at here. Okay, very rapidly I'm trying to finish this chapter. So you know natural number starts from all natural numbers start from 1 to 3 onwards. All natural numbers start from 1 to 3 onwards. All whole numbers starting from 0. Whole number that is equal to 0, 2, 1, 2, 3, etc. etc. Then integers all negative and positive whole numbers. All negative and positive whole numbers. Okay. So this is equal to all negative and positive whole numbers are integers. Next that is a q, a rational number, a number in the form of p by q. p by q where p is integer, q is integer. जदि गोटे p by आउ q थिबो बुझि परलो तो जदि p आउ q थिबो p टा गोटे इंटीजर हेथिबो q टा गोटे इंटीजर हेथिबो ताहाले सेटा हमें कहबा किंतु q टा 0 हे नथिबो ताले हम रैशनल नंबर कहबा जेमति कि 3/5 रैशनल नंबर -3/2 गोटे रैशनल नंबर 0/2 also rational number but 2/0 is not a rational number. Okay, any number in the form of p by q where p is an integer, q is an integer but q is not equal to 0, then we can say that that is a rational number. I hope you understood. So all this that means natural number is also rational number. Rational number, then whole number is also rational number because denominator is a 1 everywhere. 1 माने लिखिवा जा 1/1 लिखिया से 2 लिखिवा जा 2/1 लिखिवा से right like that. So denominator 1 अछि माने 0 हेनी माने that is rational number finished. But numerator denominator both should be integer. Numerator integer थिबो denominator भी integer थिबो. मो ततर स्पीड कहूची फटाफट कहूची व्यस्त होदा कने तम YouTube रे तमे वीडियो रे देखुछ ना मोबाइल रे आराम से दिथर तिनथर सुनि जानि परिबो मु कोन कहूची मु कहली रीरे गोटे रेशनल नंबर थिबो p by q where p is integer, q is integer but q is not equal to 0 0 हे नथिबो किंतु बोथ टा इंटीजर हेथिबे ताहाले रेशनल नंबर हबो. ओके तो ये सरला तो ये रेशनल नंबर एति पार्ट सरला. तो रेशनल नंबर हमर ई चैप्टर कोन कोन अछि ये रेशनल नंबर आईडिया पाई गेलो. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर नेक्स्ट डिस्कस रियल नंबर रे एटा असला कोन ना √2 is an irrational number. √2 है तो जस्ट यार कहली रियल नंबर ना तो गोटे कहली को नेचुरल नंबर कहली नेचुरल नंबर देन होल नंबर देन इंटीजर देन q is a rational number. Another one is I told that is q dash जोटा कहली q dash that is irrational number. That irrational number is here √2 √3 etc. So irrational number this is also real number. Okay, real number. Now √2 is an irrational number. What is √2? √2 is irrational number. What irrational number means what is irrational number?
the irrational number means that is what? Irrational number means any number which is in the form of a number which is not in the form of p by q, and that is an NTNR, non-terminating, non-repeating decimal number. What? Non-terminating, non-repeating decimal numbers are irrational number. NTNR. So NTNR root to 1.41 something 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 will continue. So this is non-terminating, neither terminating nor repeating. It is a what? Non-terminating, non-repeating. But look at here, 1.01, 001, 001, chata 01, like this. What is this? This is a what? That is irrational number. This is irrational number. Now we are going to prove that how root 2 is a irrational number. Prove it in first chapter. That will discuss. Okay, in the first chapter that will discuss. Ready? Root 2 is a irrational number. Let root 2 is a rational number. Let root 2 is equal to p by q. Where root 2 is equal to p by q? Is condition is that when p and q both should be co-prime, where p and q co-prime. You know co-prime, the pair of number which HCF is 1, that is called co-prime. Jahar HCF 1 thibo, p और k number दियो नियो जहार की HCF 1 thibo. तो root 2 square is equal to p square by q square. So let us assume that here we have to written, you have to write here. Let us assume root 2 is a rational number. Already I told, let root is a, I assume I have already written rational number. Let us assume. Okay, let us assume, because our assumption may be wrong or right, I don't know. But we have proceeding. So root 2 square equal to this one, then 2 is equal to p square by q square. Finally, then p square is equal to q square. So now p square is divisible by, now p square is divisible by 2. So p is equal to also divisible by 2. As p is equal to divisible by 2, let p is equal to 2m. So finally p square is equal to 2m whole square. So finally p square is equal to 4m square. Now this is p square is equal to 4m square. Look at here, and again p square is equal to 2q square. So equation 1 and equation 2. Equation 1 and equation 2, that is equal to same. That is equal to 2q square is equal to 4m square. Clear? So I hope this four chapters one video may not possible, so it is very difficult to teach, because only one chapter I will try to finish, one or two, ज़्यादा one गोटे कि मैं दीटा सारिबा चारटा का सजीवनी गोटे वीडियो रे सेते हम टिके सॉरी चेष्टा करते सारिबा कि जो डिटेल्स न कहले तमे माने बुझी परिबोनी पिला माने सेते में हम दीटा वीडियो आज करबा दुईटा चैप्टर शेष करबा नेक्स्ट वीडियो रे कंटीन्यूअसली आज ही कर दियो मु वीडियो रा तो दुईटा वीडियो आज करबी एबे करबी नेक्स्ट आउ गोटे वीडियो रे एटा रखिबी आ दीटा किमा गोटे रखिबी देखिए पॉसिबल देखिए कौन हो पड़े गोटे हो गोटे वीडियो दी तीन दी हो भल कथा ना गोटे वीडियो गोटे हम ताले चारटा कि तीन वीडियो करबा ओके बी रेडी देन लुक एट हियर दिस इज p square दिस इज 2q square नाउ one equation 2 equation both equation look at here this is also p square equal to 2q square and p square 4 ता माने 2q square 4m square so finally q square is equal to 2 कटला तो 2m square ओके ना तो q square equal to 2m square तो q तो माने q here p is divisible by 2 by 2 no and q is divisible by divisible by 2 ओके बोर्ड देखा जाए ठीक से देखिलो हां तो q is also divisible by 2 look at here so in this case p and here we have taken p and q co-prime that means HCF of p and q is equal to 1 only one थी जार HCF 1 ही थी आओ के नथि कि नेठी कोन हला p और q रो लास्ट टाइम कंक्लूजन पहुंचले जे p टा 2 रे डिविजिबल आओ p टा भी q टा भी 2 रे डिविजिबल माने p और q बोथ टा 2 रे डिविजिबल होची त माने HCF 1 केमते होबो HCF 2 भी हेबे ना कान बोथ डिविजिबल 2 तो HCF is 2 तांकर HCF 2 भी हेबार चांस कम c भी 2 रो c भी 2 रो तो HCF होय तो लो माने हाईएस्ट काउंट फैक्टर 2 हे पारे
सो दैट इज व्हाई एचसीएफ 1 आवर चांस ही नहीं तो सिंस एचसीएफ 1 आवर चांस नहीं ताहले हमरो ए जो कथाटा आमे जो नेतले अज्यूमशन करथिले से अज्यूमशन रॉन्ग सो आवर अज्यूमशन इज रॉन्ग देयरफॉर रूट इज ए what not a rational number it is a rational number I hope you understood तो it लिख दो therefore it is not possible so p and q both are divisible by 2 therefore HCF of p and q cannot be 2 hello so our addition is wrong so thus root 2 is a what not rational number root 2 is a irrational number तो रूट टू जे रेशनल नंबर मो कथा ध्यान दे सुनछ बोर्ड रे मु टिके शॉर्टकट लिख देली ध्यान दे सुनिबो बुझी जिवो ताले रूट टाइम गले रूट टू जे राइट रूट टू जे रेशनल नंबर एंड द फॉर्म ऑफ p by q and squaring to both side and we got remaining steps so finally we got that p and q where we have taken the p by q p and q both have no hcf only one is the hcf but at the end we got that they have a hcf which is 2 that means it pura completely wrong our assumption is completely wrong it contradicts our assumption हम assumption को ये contradict कला माने कथा मानलानी उल्टा हे गला तो माने contradict कला माने पूरा मैच कलानी कथा सेति भाई this is not a rational number it is a irrational number hope real number finished next we'll discuss polynomial in next video just continuously one video it was large is less is एति भाई next लगे हो कला तो कंटिन्यू देखु थाओ वाच कर थाओ भल लागला संगे संगे इमीडिएटली प्लीज शेयर करो लाइक करो हला ताले मु आज को कमेंट करछि जत्ते सब 10th क्लास पिला माने अच्छा हम ओडिसा जोड भी थाओ मु सब तक तम कमेंट देखि कि तमरो जो सब्सक्राइब देखि कि मु आज प्रॉमिस करछि मु समस्त को YouTube माध्यम रे जत्ते सब पिला अच्छा मैथ और साइंस मागणा ही पढ़िबो सब चैप्टर वाइज तुम कमेंट देखि गोटे पर गोटे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेबी कौन पैसा ही लागोनी खाली मो टिके जस्ट मैं चाहूँ किसी मात्रा आमर एडवर्टाइज हो आउ समस्त जानतु मत चिन्हिया दरकार तो मो मेसेजटा तुम पाखे पहुँचा दरकार बस है जस्ट इफ यू अंडरस्टूड क्लियरली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू